प्रबल वर्षा और पवन में भुशुड़ी पड़ी दिल्ली विमान बंदर छात। इंदिरा गांधी अंतर्जातीय विमान बंदर 1 नंबर टर्मिनाल छात भुशुड़ी पड़ू जानवाहन दबी जाइए। जनकर मृत्यु होता बेले 6 गुरुतर आहत होती। टर्मिनाल छात भुशुड़ी पड़ू एकाधिक कार क्षतिग्रस्त होती। टर्मिनाल 1 रे विमान सेवा बातिल होता बेले एकाधिक विमान उड़ाण प्रभावित होती। घटनास्थल में अग्निशम बाहिनी टीम पहुंची उद्धार काम जारी रखिंट। गुरुवार ठारू दिल्ली में प्रबल वर्षा जारी रही। विभिन्न स्थान में जलबंदी स्थिति लगी रही। तेज आज सकाळु विमान बंदर में ये अघटन घटी। कार उपरे छात भुशुड़ी पड़ू कार भितर लोके आहत होती। सेपटे घटना को गुरुतर सह नहीं केन्द्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री। विमान बंदर पुनरुद्धार काम त्वरान्वित करा सहित गुरुतर को उद्धार कर चिकित्सा सेवा जोगाई दिया कथा कहते। या सहित निजे सबु कामर समीक्षा करुवा सूचना देते बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री। प्रबल वर्षा पवन रे भुशुड़ी पड़ी दिल्ली विमान बंदर छात। इंदिरा गांधी अंतर्जातीय विमान बंदर 1 नंबर टर्मिनाल छात भुशुड़ी पड़ू जानवाहन दबी जाइए। जनकर मृत्यु होता बेले घटना 6 जन गुरुतर आहत होती। टर्मिनाल छात भुशुड़ी पड़ू एकाधिक कार क्षतिग्रस्त होती। So today morning at 5 o'clock, a very unfortunate incident happened at Terminal 1, Delhi Airport. And like you already know, a section of the canopy, which is outside of the airport extension of the airport building, has collapsed due to heavy rains that has been happening since the night. And we want to express our condolence to the life that has been lost in this tragic incident also. And along with that, 4 people have also been injured. So we are taking care of them right now. As soon as the incident happened, it has come to our notice and we have reacted immediately. We have immediately sent the emergency response team, the fire safety team, and also the CISF, NDRF teams. Everyone was available at the site and they have done thorough inspection so that no other casualties are there or no other injured are there which are stuck in the collapse. So right now the situation is under control. The whole rest of the terminal building has been closed off and everything is being thoroughly inspected so that any other untoward incident does not happen here. And regarding the flights that are supposed to be operating from T1, we have informed the airlines people immediately that passengers are the first priority for us also. So passengers shouldn't face any inconvenience. So till 2 o'clock, the flights have been cancelled because an immediate alternative was not able to be established here. So till 2 o'clock, the flights have been cancelled, and whatever flights have been cancelled, the passengers have been told that there'll be full refunds to them. And other than that, if they want to travel in an alternative route, that is also being provided. And from 2 o'clock, whatever routes are being operated from T1 have been diverted to T2 and T3. So necessary arrangements are being made at T2 and T3. इंदिरा गांधी अंतर्जातीय विमान बंदर टर्मिनाल 1 छात भुशुड़ी पड़ा फल सही टर्मिनाल जावा आसवा करने समस्त विमान को बातिल करा परवर्ती समय कौन पदक्षेप नि से दिगरे चिंता करा जाउछि।